Let's start. Before that, I've shared a PDF file of permutation and combination, all questions done in the class. मैंने क्लास में हम लोग ने जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के सम्स किए, टोटल 80 प्लस सम्स किए हम लोग ने, 70 ऑड परम्यूटेशन पे किए, ओके, एंड देन 10 ऑड कॉम्बिनेशंस पे किए. तो सब क्वेश्चंस का PDF फाइल बना के somebody asked me, and then I said, why to give it to only one student? Let me share it with all of you. वो PDF फाइल has been shared. मिला क्या? देखा भी क्या? Class work, all sums, question answers. Okay. So I'm doing whatever you want from my side. I'm giving 100%. You give your 100%. This is a subject where normally students fail in mathematics. Okay. So I don't want any failure this year. Maths में कम से कम fail नहीं होना चाहिए. Okay. Do a bit from your side. थोड़ा सा मेहनत करो, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ. मैथ्स में थोड़ा मेहनत करो, जो टॉपिक इजी लगता है उसके ऊपर. तो गो थ्रू ऑल दोस क्वेश्चंस एंड देन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज करते जाओ. इनफैक्ट इन योर बुक फॉर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एडिशनल क्वेश्चंस बिकॉज देयर आर इनफ क्वेश्चंस, 144 क्वेश्चंस एट द एंड प्लस A, B, C. If I'm not wrong, A, B, C exercises that we solved A. I'm talking about permutation combination. A, B we have solved. C we are solving C. And if I don't know whether D is there or not. So D also. And then there are permutation combination at the end. There are 144 questions. They're easy one. First 10, 15. Some of the questions are similar. Questions are repeated. First 10, 20 questions, odd questions. Barabar se karo. Before that, go through all this question answers which we have done in the class. Okay, the PDF file is shared with you, so go through that and then start solving that exercise. Today we are starting with sets relation. How many of you gave yesterday both the exams, morning also and evening also? Few of you will be there who gave both the exams. कोई नहीं है? Yes, good. You should give. Okay, and both the papers were different if I'm not wrong. Okay. I know morning there was issue, so I set another paper and I gave another. Yes, there can be certain mistakes. Like one question, it was 1.5 year, looks to be 11/2. वो ठीक है, गलती हो गया, वो 1 point डालने का typing में mistake हो गया. So that is typing mistake. Another request to you is that PDF file which I have shared, permutation and combination PDF file. If you find any mistake in that, calculation mistake especially, okay, or any spelling or any mistake for that matter, please bring it to my notice. Okay, होंगे गलतियां, मैं नहीं बोलता कि गलतियां नहीं होंगी. फॉर एग्जाम्पल 6 फैक्टोरियल लिखा है और आगे जाके 6 ही ले आया, फैक्टोरियल लिखना ही भूल गया, तो दैट मे हैपन. Okay, so just check because this is first year and I have to make so many PPTs. I am not taking only your maths. TY BCom is there, then your CA Inter, your computer lectures, IT lectures are there. So there are so many PPTs to prepare. So there may be certain mistake, typing mistake, and that may happen. Okay. So if you can find out any mistake, please let me know. I'll appreciate that. Always, whenever anybody says, sir, this is wrong. Yes. If it is wrong, I say yes. Thank you. Okay. And if I'm not wrong, I'll say no. Please, you check on your side. I feel this is right. Okay. So that way. Let's start. A small chapter, the set chapter is again easy chapter. On set, I will not give you any extra questions. A lot of questions are there in the book. That is your study material. Even permutation combination, no extra homework from my side. You do that, that is more than enough. Okay. Certain sums, so you can just do orally. There are 144. तो 144 देख के डरो मत. 144 में से 50 क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे. You don't have to use pencil also, pencil also. Just looking at the sum, you know what will be the answer. So certain sums are like that. Okay, let's start. So relations. In fact, we did 2 slides of relation in the last lecture, but I'm repeating that relations again. Ordered pair. If you remember, order pair. A comma B and B comma A is not one and the same. Sometimes it may be same. Like 1 comma 1 is there. If you make it another way,
A comma B is 1 comma 1. Other way, B comma A is also 1 comma 1. But that is in rare cases or in certain cases, not always. If it is 1 comma 2, you reverse it, it becomes 2 comma 1. So that is order pair. Order is important. A pair of objects listed in a specific order is called as order pair. Okay. Specific order, it should be coordinates of a point 1 comma 2 or 2 comma 1 or 5 comma 3 and so on. They are not same. Is 1 comma 2 on a graph and 2 comma 1, is it one and the same? The answer is no. There are two different points. Okay. In the order pair, A and B are called as the A is called as the first element and B is called as a second element. बच्चों का काम है, पहला है उसको first element ही बोलेंगे, जो second है उसको second element ही बोलेंगे, first and second. Then Cartesian product, ये भी याद होगा क्या है? All possible order pair of AB where A belongs to capital A and B belongs to capital B, that is set A and set B, is called as Cartesian product of A to B and denoted by A cross B. We don't say A multiplied by B, we say A cross B. That cross can be capital, cross can be small. That doesn't make it, that is X we use. Usually A cross B is not is equal to B cross A. Normally in multiplication, what happens? 4 multiplied by 3 and 3 multiplied by 2 gives you both answer, but that doesn't happen in sets. A cross B and B cross A, generally they are not equal. Sometimes kabhi kabar equal nikal bhi jayega, but normally they are not equal. Then this example, if you remember, A is having value 1 and 2, B is having value A, B, C. So you have to make all combination 1A, 1B, 1C, then 2A, 2B, 2C. Agreed? It is called as A cross B. And B cross A will be B first, order pair. So B first. A1, A2, B1, B2, C1, C2. That will be B cross A. I get that. A cross B. Any doubt with A cross B? समझा कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा. A का पहला वैल्यू लिया, देखो इधर, अगर डाउट भी है तो दिखा देता तो क्लियर हो जाएगा. This one I took from A, from 1, B, from 1, C. Then similarly with 2, 2A, 2B, 2C. Multiplication. Two A, then 2B, then 2C. Correct? Then B cross A. B cross A, order is important. B first. So it will be ulta. A1, A2. Then B1, B2. Then C, C1, C2. A1, A2, B1, B2, C1, C2 in bracket and in between comma, comma, comma. Okay. Now dear student, tell me in A cross B, how many elements are there in that set? Number of elements in that set A. A cross B, sorry. इधर इसमें कितने elements है? Number of elements. One bracket will be called as one element. Okay. 1 comma A together is one element because that is in bracket. तो कितने elements हैं? 6. And B cross A में भी 6. Element 6 है. 6 elements and 6 elements. How you got 6 elements? N of A. A में कितने elements है? A में. Set A में how many elements are there? सेट ए में कितने एलिमेंट? ए क्रॉस बी नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ सेट ए 2 एंड सेट बी में कितने हैं? 3 है. दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 6 मिला कहां से आपको? एलिमेंट्स ऑफ ए विच इज 2 इनटू एलिमेंट्स ऑफ बी विच इज 3. एंड हियर उल्टा लिखेंगे, बी इनटू ए बोला है ना, तो पहला बी के एलिमेंट्स लेंगे. बी के एलिमेंट्स 3 इनटू 2.
Any doubt? 6 m into n. Okay, आगे आएगा भी. Any doubt till now? समझ में आ रहा है? Next, note बोला भी है, देखो इधर note. If NA, what do you mean by NA? Number of elements in A equal to m and number of elements in B are m and n, then number of elements in A cross B will be m into n. Clear? वही तो बता रहा था मैं. Next, मैपिंग डायग्राम. ये नया चलो हो गया, उतना तो अपन ने लास्ट लेक्चर में किया था. दिस इज न्यू. नाउ मैपिंग डायग्राम इजी है, कुछ नहीं है. मैपिंग डायग्राम्स. ओके, A set A is having 1 2 3 3 elements. Set B is having 2 elements, A comma B. Further, A cross B. A cross B अभी मालूम है आपको. A cross B 1 A cross B, तो A पहला आएगा, B बाद में आएगा. ये ऑर्डर याद रखो. हाँ, A cross B and B cross A is not one and the same, so be careful. A cross B, तो A के पहले एलिमेंट आएंगे 1A 1B, then 2A 2B 3A 3B. yes, definitely order can be changed. ब्रैकेट में लिखते समय A पहला लिखा जाएगा, मतलब आपने 3, B पहले लिखा होता कर्ली ब्रैकेट के अंदर, वो चलेगा. जनरली वी डोंट डू दैट. वी टेक A का फर्स्ट एलिमेंट 1, उसका B के ऑल एलिमेंट के साथ करने का. 1A 1B खत्म हो गया, फिर 2A 2B, फिर 3A 3B. ओके, नाउ दिस सेट A. एग्रीड? सेट ए में क्या लिखा था? 1 2 3, नीचे नीचे लिखा अमाउंट है ना सर्कल. ये सेट बी है. अभी लाइन ड्रॉ करने का, दैट इज कॉल्ड एज मैपिंग डायग्राम. ए से बी में 1 का रिलेशन किसके साथ साथ है? ए 1 के साथ बी है, सॉरी 1 के साथ ए भी है, 1 के साथ बी भी है ना, पहले दो एलिमेंट्स में. इधर 1 से का. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. Here, look at this. 1A and 1B. 1 का रिश्ता A के साथ भी है, रिलेशन. 1 का रिलेशन B के साथ भी है, तो एरो ड्रॉ करने का. कोई डाउट? समझ में आ गया? तो 2 का रिश्ता भी A के साथ है, 2 का रिश्ता भी B के साथ है, रिलेशन. तो 2 से 2 एरो निकलेंगे, 1 गोइंग टू A 1 गोइंग टू B. सेम विथ 3 का भी रिलेशन A और B के साथ, दोनों के साथ है, 2 टाइप. तो हर एक के कितने, सॉरी 2 एरोज, हर एक के कितने एरोज आ गए? 2 एरो. A से B में जाने वाले 2 एरो दिखेंगे हर एक के, एवरी एलिमेंट. 1 के 2, 2 के 2, 3 के भी 2 है, मल्टीपल एरोज. ओके, दिस इज कॉल्ड एज मैपिंग डायग्राम. क्लियर? नेक्स्ट, let A and B are two sets containing 4 elements and 2 elements respectively. क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11. 2 सेट्स है, A में कितने एलिमेंट्स है? 4. B में कितने एलिमेंट्स है? 2 respective. The number of subset of A into B having at least 3 elements is subset of A cross B. पहले A cross B में कितने एलिमेंट्स आएंगे? सबसेट नहीं पूछ रहा हूं, A cross B में कितने एलिमेंट्स आएंगे? A cross B में 8 आएगा, 4 into 2. Let me write here. A cross B. Number of elements, ब्रैकेट में डाल के बाहर n लिखूंगा. एग्रीड? Cardinal of A cross B is equal to 8. The number of element in A cross B are 8. Therefore, subset of A cross B will be number of subset of A cross B.
नंबर ऑफ सबसेट्स. कुछ किया था ये सबसेट? यस. Yes, correct. Correct. All of you are correct. What is that formula? 2 raised to number of elements. So 2 raised to, अगर आपको याद है 2 raised to number of elements कितने हैं? 8 is equal to 256. रुको, 256 not the final answer. 256 क्या हो गया? सबसेट में कितने एलिमेंट्स हो गए? 256. बट क्या बोला है? हैविंग, ये पार्ट बाकी है, एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स. नाउ you will agree with in this 256. In 256 one null वाला सेट भी रहेगा. Agreed or not? One null सेट भी रहेगा. null सेट कितना रहेगा? 1. Agreed? हमको क्या चाहिए? अंडरलाइन किया देखो क्वेश्चन में, having at least 3 elements. null में कितने एलिमेंट्स होते हैं? How many elements are there in null? 0, nothing. तो इसको निकालना पड़ेगा. ओके, 256 में से आउट हो गया. नाउ सिंगल होने वाले कितने होंगे? कोई बता सकता है मेरे को? सिंगल एलिमेंट्स इन सबसेट सिंगलटन. करेक्ट. सिंगलटन 8 होंगे. एलिमेंट्स कितने? 8 है ना, सिंगलटन वाले 8 होंगे. करेक्ट है अभी भी. एंड 2 एलिमेंट्स वाले कितने होंगे? थोड़ा सा इधर 2 एलिमेंट्स आता है तो बोलो, नहीं तो मैं बता देता हूं आपको. 2 एलिमेंट्स. नहीं बता दूं मैं बता दूं? चलो मैं बता देता हूं. नहीं, आपसे वैसे एक्सपेक्ट भी नहीं था, आपको नहीं आएगा, बट कोई सोचता है तो खत्म नहीं हुआ. अभी तक भी कोई लिख सकता है. चलो मैं और आगे लिखता हूं. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से कॉम्बिनेशन वाला कुछ पार्ट लगेगा. 8C और अपन को कितने चाहिए? 2 एलिमेंट्स. 8C2. आई एम वेटिंग. टेल मी रिजल्ट ऑफ 8C2. सर 8C2 क्या? 2 एलिमेंट्स ना, इसलिए 8C2. 8C2 करो और इसका आंसर बता दो. 8C2 इस फाइनल आंसर इज व्हाट? 28. क्या आएगा 8C2 का आंसर? 8 फैक्टोरियल. या अपने शॉर्टकट से जाते हैं तो शॉर्टकट से जाते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं. 8 into 7, 2 है ना, 8 into 7 divided by 2 factorial. 2 factorial is 2. 2 ones are 2, 2 fours are 8. कितना आएगा? 28. अभी आंसर बता सकते हैं? ऑलमोस्ट आंसर रेडी हो गया अपना. 220, 210, 219, 256. व्हाट विल बी द आंसर? 219. सबट्रैक्ट करना इन सब. ये हमको नहीं चाहिए, नल वाला नहीं चाहिए, सिंगल वाला नहीं चाहिए, 2 वाला नहीं चाहिए. तो 219 विल बी द आंसर. एनीवे वहां पे प्रिंटेड मिलेगा आपको. जस्ट रुको, देखो क्या किया है. n of a is equal to 4, n of b is equal to 2. So n of a into b is equal to 8. Total subset of a into b is 2 a cross b. A cross b is 2 in raised to 8, 256, minus no element subset, that is null, 1 set, minus single element subset 8, minus 2 element subset 8C2, which is 28. So finally 256 minus 1 minus 8 minus 28, and that gives you 219. Take a screenshot if you want. Or at the end, if you want, here also, if you want, at the end, whatever this question answers are there, I'll send a PDF file like I've sent today.
परमिटेशन कॉम्बिनेशन का पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर्स. ओके, सो क्वेश्चन आंसर इवन इफ यू डोंट टेक इट चलेगा. ऑल क्वेश्चंस, सी इफ यू टेक स्क्रीनशॉट यू विल हैव ओनली वन, then next screenshot किधर ढूंढना पड़ेगा. So if I send a PDF file, all question answers will be at one go, at one place. Agreed? Just remind me, but after the lecture, that is once the topic is over, sir, PDF file for question answers. So question answers wherever are there, that other theory and all, you take screenshots. But question answers, yes, I'll send you. Just remind me, but and give me 1 or 2 days in between. It's not a work of 1 minute or 2 minutes. It takes around 1 hour or so to make everything ready. PDF file. चलो हो गया. Next, relation definition. Relation definition. अभी relation देखेंगे ठीक से. Let A and B are the two sets. The relation R for relation from A to B is a subset of A cross B. Always. What it says, if let A and B are the two set. One set is A, another set is B. Then relation R for relation from A to B is a subset of A cross B. Mind you, relation A to B and B to A is not one and the same. They are two different relations. A to B and B to A are two different relations. We'll see that. For example, if A, what are the elements of A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 to 9. B is 1, 2, 3, 4, 5, and R is relation. Okay, A comma B is such that A is equal to 2B. समझे इधर क्या इक्वेशन दिया? इक्वेशंस मिलेगा आपको. इक्वेशन देखो इधर क्या दिया? A is equal to, इक्वेशन इंपॉर्टेंट होता है. क्या दिया रिलेशन? A should be always is equal to 2B. 2B. Okay, A belongs to set A, B belongs to set B. Then क्या आएगा कुछ करने को? वैल्यू ऑफ B लेने का. वैल्यू ऑफ B is what? 1. डालो इस इक्वेशन में. B का वैल्यू लिया पहला, इक्वेशन में डालो 1 into 2, कितना हो गया? 2. वैल्यू आ गई A की. तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ A रिलेशन के बाद, ओके, is 1. Then take 2 into 2. पहला 1 लिया, फिर B का सेकेंड वैल्यू लेना है 2, put it in the equation, then 3, then 4, then 5. Are you getting me or not? हेलो, A कैसे मिलेगा तुमको? यहाँ पे दिया है इक्वेशन, A is equal to 2B. So फर्स्ट B का वैल्यू लिया, कितना लिया? 1. डालो इक्वेशन में, 1 डाल दिया इक्वेशन में, आंसर कितना आएगा? 2 into 1, that is 1. क्या है 1? A की वैल्यू आई. A फर्स्ट 1, कॉमा क्या डाला था आपने? 1. B की वैल्यू 1. A कॉमा B, कॉमा B सेकेंड. B की वैल्यू डालो 2 डाल दिया तो कॉमा के बाद 2 लिखता हूँ. ये B की वैल्यू है तो B 2 डाल दिया. अभी A निकाल दे, कितना आएगा? A 2 into 2, that is 4 कॉमा 2. नेक्स्ट कॉमा, अब क्या डालेंगे? 3 डालेंगे. तो ब्रैकेट में A की जगह बाकी रखता हूँ 3. डाल दिया मैंने 3 इक्वेशन में. B is 3, so 2B is 6. देन 4 डालो ऐसे ही, तो क्या मिलेगा? 4 डालने के बाद डबल कर रहा है ना ये, 8 कॉमा 4 मिलेगा.